ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਟੋਨੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਡੀਜੀ ਨੇ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੇਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟਸ ਜੁੜੇ ਪਏ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੂਟ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੋਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਟਸ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਪੀਸੀਏ ਦਾ ਹਰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੈਂਪ ਮਿਲੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੂਮਨ ਲੀਗ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕੈਂਪ ਮਿਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਕੈਂਪ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੀਸੀਏ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬੈਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੇਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। Absolutely wonderful to be here. I used to be the Chief Executive of Tasmanian Cricket, so to be here now at this ground in Punjab is an absolute dream. The welcome that we've had here has been extraordinary. Wonderful to meet all the young players and great to see some real up-and-coming stars. So thank you for looking after us here. It's been absolutely fabulous. We really appreciate everything that you've done. Your first visit in Punjab? First time in Punjab, indeed. In fact, my first time in India. So it's I wanted to come to all the special places first, and I couldn't think of anywhere more special than this ground. Tell me about India. Tell me about India experience. What was your experience this time? Well, my experience this time has been 2 days in Chandigarh. We went to the lovely university, today, which was an amazing experience. The size of the university, the welcome there was extraordinary. I can't say enough for the welcoming nature of all the Indian people. To be here today, also to see the Golden Temple. What an incredibly spiritual place that is, and I feel so fortunate to have been able to visit and see that. So I can't speak highly enough of India and the welcome that I've had. Beautiful people, extraordinary place. So how do you see India and Australia cricket? Well, they've really become the two greatest rivals in the world now. Traditionally, it was always Australia and England, but Australia and India have been vying over the last few years as to who was the number one team. India were absolutely dominating in the last World Cup. Australia somehow found a way to win that one, but then India went and got revenge on us shortly after that too. So it's such an amazing rivalry between two great nations, and really I think the two best cricketing countries in the world, and the two countries in the world that love cricket more than anybody else does. You met the players. Tell me about cricket. Tell me about ground. You have experience now. Well, my experience on this ground is basically staying on this one. I really want to go for a walk out to the pitch to have a look over at the nets as well. But what a beautiful setting this ground is. Seriously, I don't think I'll ever have the opportunity to play on this ground, but to be able to come here and walk on this ground is, as I said, an extraordinarily great opportunity for me, and one that I'll remember for a long time, and one that when I return to Australia I'll be telling everybody about. So now he's a secretary. Navjot Grover is a secretary. Yes. Tell me about Yes. and your experience, your ground experience. Tell me about. Sorry, Your experience. What about the stadium? This stadium in Well, the experience here, as I said, is coming here, meeting all the young players, seeing this ground, looking around at the old stands here, the history of this ground, what this obviously means to the local people here, and more broadly cricket right across India. As I said, you can just feel
the history which is here. So for me to be able to stand here with my feet on this sacred turf is wonderful. So Punjab is known for his food. Have you tasted the food of Punjab? I have, and I famous kulcha, lassi. yeah, and I really don't want to go back to eating Australian food again. The food here is just wonderful. So. And what was the story of Ricky Ponting? We have heard. Oh, do you want me to tell you the story there? So Ricky Ponting comes from Tasmania, and so I was chief executive of Tasmanian cricket many years ago. When Ricky was 19 years old, I received a phone call from Cricket Australia when Tasmania were playing a tour match against Sri Lanka. They actually asked me if I could find Ricky Ponting to let him know he'd just been named in the Australian team for the first time. Nobody knew where he was. We were hunting around everywhere. Finally, someone said, "I think he's in the bathroom." So I went running in because we had to do a media conference. He was there. I told him he has to get out quickly. We need a media conference. He's been named in the team. That's how poor Ricky found out he was in the Australian team. He was in the bathroom at the time. Thank you, Sir, sir. what message you give to Indian public. To Indian public, just that you have such an extraordinary history. We share so many commonalities, Australia and India. I just look so forward to us getting closer and closer in sport, in business, in everything that we do, and we can learn so much from you. And as I said, I'm just very grateful for the opportunity to do so. But I think Australia and India, the strength in terms of everything is just going to get closer and closer and closer. Thank you so much, sir. Thank you to all of you. मेरे को इट्स मेरा तो ये घर वापसी हुआ, आज मैं अपनी रूट से जुड़ा, बिकॉज मैं थोड़ा इमोशनल भी हुआ, बिकॉज माई डैडी मेरे पिताजी ही वॉज नोन एज ए शाहजी फ्रॉम दिस ग्राउंड. ही वॉज अ फास्ट बॉलर. ही प्लेड approximately 14 years Ranji Trophy from this ground at the time of Bishan Singh Bedi. Bishan Singh Bedi, Daddy, Madan Lal, Vijay Mehra, they all played together here in this ground. That was the heritage of this ground is there. मेरे को काफ़ी महसूस हुआ कि आज मैं शायद मेरे डैडी के साथ ही हूँ. सर आज आप किन किन के साथ हैं? I got a very dear friend of me, Tony Fraser. He's from Australia. He is one of the part of the ecosystem of the cricket. Cricket ACT, Cricket Tasmania और Cricket Australia के साथ he has strong bondings. He is a great human being, and also he was the part of the larger cricket organizations in the Australia. इतने टाइम के बाद आप अमृतसर गेम एसोसिएशन में हैं, क्या बदलाव आपको लगा? मेरे को लगा कि the real sense is यहाँ बच्चे खेलना, मेरे को बच्चियों को देखने का मौका मिला. And the female sports players are here. फिजियोथेरेपिस्ट है, कोचेज़ हैं. यू नो दिस इज़ द नीड ऑफ आवर. हमको इन्होंने इनिशिएटिव लिया. यंग ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग ये स्पोर्ट्स लवर्स हैं, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए. एंड आई एम बीइंग प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स हिंदुजा ग्रुप. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. हमारी कंपनी गल्फ ऑयल, it is one of the main company in India which is sponsoring the cricket associated with cricket. महेंद्र धोनी जी हमारे ये हमारा जो चेन्नई सुपर किंग है उसमें हमारे साथ ब्रांडिंग करते हैं गल्फ ऑयल की. हमारा मैं बात करूंगा अपने गल्फ ऑयल के एमडी से, मिस्टर चावला से, तो हाउ इट इज़ कैन बी डन, कैसे इस एरिया में कुछ कर सकते हैं. कोई टूर्नामेंट स्पॉन्सर हो, क्या कोई इवेंट स्पॉन्सर करें और कुछ गल्फ ऑयल की ब्रांडिंग की जा सके. मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि कुछ किया जा सके यहाँ पे, और वी विल डू इट आवर बेस्ट. सर नवजोत जी तो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि वो जो गेम्स लवर्स हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, उनको आगे आना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना लाइफ में, सबको जोड़ना है. ये एक प्रेरणा का स्रोत बनेंगे. ही विल बिकम ए मोटिवेशन टू अदर पीपल. जो क्रिकेट आपकी यहाँ पे डाइड हो गई थी, जो क्रिकेट आपकी यहाँ पे डाइड हो गई थी, जिस ग्राउंड में मदन लाल खेला है, एंड मेरे को याद है डैडी मेरे ने आवाज़ लगाते थे मद्दा. डैडी कहते थे मद्दा इधर आ, तो वो गुस्सा नहीं करते थे. मैं एमसीसी वर्सेस इंडिया का मैच था जलंधर में, तो डैडी ने मद्दा इधर आइए, वो उठ के भागे आए, शाहजी आप आए. तो मीन्स वो अदब था, वो ख़त्म हो गया था यहाँ पे. तो अभी आप इसको दोबारा रिवाइव कर रहे हो, तो हम सब सपोर्ट करेंगे. और ये दिस वाज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ द टोनी, दिस इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, द क्रिकेट. एंड क्रिकेट वाज
controlled from here by the OCM. Yes. The OCM, Orient Carpet Manufacturers. C. Consolidis was the MD. He was a Britisher. He was the creating the team here. And Bishan Singh Bedi was played here from OCM. Madan Lal, C. Roger. He used to live in the Kent and he played with my father Ranji trophies. So I met so many people in my life, with my father, Tony Greig, and other people in London. They are my daddy's friend. When the daddy used to play Ranji Trophy and they used to come to India and they play the matches. सर इसी ग्राउंड में इंटरनेशनल लेवल के मैचेस भी हो 100%. हैं, तो लगता है कि अब नवजोत सिंह ग्रोवर सेक्रेटरी हैं कि ऐसा दिन फिर आएगा? आप बिल्कुल आ सकता है. इसमें कॉर्पोरेट हाउसेज इन्वॉल्व होने पड़ेंगे, कॉर्पोरेट हाउसेज इन्वॉल्व होंगे और साथ में एक विश होगी. थोड़ा सा यहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल सिस्टम का है वो भी थोड़ा सा पुश करेगा, प्रशासन करेगा. तो मैं नहीं समझता कि इस ग्राउंड को रिवाइव ना किया जा सके. थैंक यू सर. थैंक यू.